just me being a magician in like at some point in my life. I used to do magic and all, like card Okay, magic and all suppose that. See, there's a very thin line between being, again, nothing wrong with either, but being an artist and an influencer. Not about कि यार ये commercial है, underground है. There's another subgenre which is underground commercial. कुछ time पहले अगर आप देखो, and this I'm saying not to like 5 years ago, Delhi was heavily inspired by the Bombay scene. welcome Rhythm V. I'm so glad to have you here, man. And Thank you so much. It's a pleasure to be here again, and yes, thank you so much for the yeah. lovely introduction. Thank you so much. Feels great to have you today. And how's your time been lately? Like I saw you performed a gig recently on your stories or something. Right, right, right. Yeah. Yeah, so it was again, like, it was for my EP Made It, Hmm. and it was with a couple of more artists that I performed with. So yeah, man, went great. Met a lot of people through my Instagram. Like I just posted a story like whoever wants to pull up, just come. Yeah. Because I did it for like free. I didn't charge anything for that. I just wanted people to come hear me out and like just have a good time. So a lot of people came in and met a lot of people that I went really well. That's crazy, man. That's crazy. So you've been into gigs and all that. But like, yeah. So I was reading about you and I found out that you've been writing since your childhood, like since your school days. You've been into poetry. You've been writing rap, and then you had that strive to go into the production side of music and start like full time, start producing full time, do this music shit professionally. So like, how was all that? How was the initial phase of music? How did you start? If you would. Well, I think I've always had a creative head, Hmm. honestly. Like, it started with, just me being a magician in, like, at some point in my life. I used to do magic and all, like, card magic and all that. Sometime before that, it was different creative things like dancing, hip hop. So I think that's where my musical roots began. The music part of it. Hmm. Because, like, even when you're dancing, you need to have that rhythm constantly going for you. Yeah. And I think just life taught me how to write. I would say it's just certain instances that I wouldn't want to share with people, but with a piece of paper and just a pen. Hmm. I think that's the least opinionated answer you can get back. It's Actually, like a yeah. feedback. So it's like a feedback, but at the same time, it's just you. सो ये जो नाम है रिदम ये यही से आया लाइक आप पहले से इस सब में थे लाइक म्यूजिक था डांसिंग था ये एंड मेरा ये वो जो मेरा ये मेरा असली नाम। अच्छा रिदम आपका रियल नाम है भाई तो रिदम मेरा जस्ट चेक्स आउट लाइक डैम मतलब काफी ये है ट्रू टू द नेम वाली बात हो गई बट यार दैट्स कूल मैन आपका पहला पहला स्पॉटिफाई रिलीज वाज इन दिसंबर 2020 इफ आई एम नॉट रॉन्ग Yes, और it is. कोविड चल रहा था उस टाइम पे कोविड का एरा Right, था right, right. सो डिड लॉकडाउन इंस्पायर यू टू लाइक गेट योर म्यूजिक इनटू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और I समथिंग लाइक think I think lockdown was like, as much as it was horrible for like so many people, including me in Yeah. many ways, of course. But like the musicality aspect of it, yes, बहुत काम किया मैंने उस time पे. And I think I realized back then only कि I have to learn production. Coming back to your previous question, कि and it's not just to produce my own music. It's just when I'm in a studio with people that know, like they do know what they're doing. Hmm. I should know how to communicate in a language कि वो काम efficiently हो जाए. Like I should know ये कि यहाँ पे इतनी threshold पे compress होनी चाहिए, all these things, all these technicalities. And I think lockdown really helped me with that, just learning everything, mixing, mastering, production, तो everything. was this all self taught like सब कुछ आपने खुद से किया या there was someone I- कोई mentor या नहीं, you नहीं, was I learned everything on my own. I didn't have a teacher for anything. that's damn cool man तो कौन सा DAW यूज करते हो आप FL या That's a controversial question to answer for a lot of producers out there. But yes, to answer your question, I feel school. FL Studio okay I mean सही है तो प्रोडक्शन वगैरह आपने कब से सीखना चालू किया लाइक मतलब जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं लाइक कब से चालू किया क्योंकि ठीक है और ये आपके अंदर डिटर्मिनेशन कब से है कि चलो ठीक है आई बीन राइटिंग म्यूजिक सिंस चाइल्डहुड आई बीन राइटिंग लिरिक्स आई बीन राइटिंग रैप्स बट अभी आई शुड rather take it into a professional way like अभी इसको थोड़ा अच्छे से I should execute it I should actually do this like एक मैं प्रोड्यूस करूँ उसको मैं मिक्स करूँ उसको मैं उसको Spotify पे डालूँ तो ये कहाँ से आया was this lockdown या फिर क्या मतलब कैसा था वो क्या I बात think this happened before lockdown only. This अच्छा। happened back in my school days. I think I realized the unorthodox aspect of life that just came into existence. कि यार मैं like I'm growing up and eventually I have to lead a family and all, and there's going to be responsibilities, and I don't want to do it the cliche way because like I'm not interested in that classic brown family mentality कि अब ये करो फिर ये करो फिर ये Yeah. करो वो मैं हुई. Not that I'm against it in any way. I understand people जो पढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं. I don't think that's something I always wanted to be in my life.
and I think writing just became a part of me unknowingly. So I realized कि like this is what I want to do. Like जब मैं अपनी कुछ चीज़ें लोगों को सुना रहा हूँ and I see it impacts them. Yeah. Like there's something they feel out of it, and I think that's just the best thing that a musician can see visibly as well. Yeah. So I think it just started in my school days कि मैं लोगों को गाने सुना रहा हूँ and it helps me just jot down my mind and introspect, and there's so many things that comes with just writing, and I realized कि this is what I do professionally. Like it changed from a passion to like work, but it still remains fun regardless. तो चाइल्डहुड में रैप कहाँ से आया? लाइक क्या उस टाइम पे इंस्पिरेशन था? किसको सुनते थे आप कि आपको लगा ओके ठीक है डैम दिस इज सो कूल भाई मेरे को भी करना चाहिए? I think it was very funny initially कि जब मैंने अपना पहला रैप लिखा था, that was in English. अच्छा. And Eminem has been an inspiration for me. For like many other artists, I think. काफी ज़्यादा वो बंदे का influence. His influence is crazy. Like writing terms में, bar terms में, flow terms में. Yeah, actually yeah, storytelling terms में वही बात है. Exactly. So I think that's what I was listening to. और मैंने एक दिन मजाक में एक रैप लिख दिया. मेरा एक दोस्त कहता है तू नहीं कर सकता ये. Like I was trying to imitate Eminem. He's like you can't, and I'm like I'm gonna show something original now. Okay. And wrote this song which had no sense but it had a good flow. अच्छा. तो वो जब मैंने लोगों को सुनाया, अब उन्हें समझ नहीं आया मैंने क्या लिखा, but the flow was fun, so they were enjoying it. So that's what I realized कि यार maybe I can rap. You can rap, yeah. मतलब the lyrics didn't make sense, but the flow carried the vibe. अरे like lyrics is something like you just work on it. It's like a muscle memory. हाँ वो तो हाँ वही बात है. आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई रेफरेंस ले लो, कोई चीज़ ले लो, but yeah exactly. सही चीज़ है. तो मैंने करा, फिर मैं लोगों के गाने सुनता रहा, बहुत सारे Eminem के, a lot of like like Western side of it, and then I switched to Indian side of it. That's when I found like all these lyrical gems, man, like Krishna, Raftaar, and like Tala Anjum, Tala Yunus, Seedhe Maut, like you name them, and there's so many other beautiful artists out there. तो इन सब से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी है आपके राइटिंग वाले एस्पेक्ट में और म्यूजिक वाले एस्पेक्ट में. अगर आप इंडिया I think I've learned a lot, yes. Not necessarily inspired from someone's writing style, but यार मैं अपना सीखा बहुत हूँ उन लोगों से for sure. Like everyone I listen to, I learn something. Be it top of the industry or like someone I just found जिनके अभी like इतनी streams नहीं है maybe. But there's so many musical gems in the underground scene as well. We'll come to the underground scene बाद में पक्का, उसके लिए भी एक मैंने रखा है. But then हाँ, तो how did your artistry like अभी लॉकडाउन के टाइम पे if I'm not wrong, दिसंबर के टाइम पे म्यूजिक वगैरह ऑफिशियल रिलीज कर रहे हो, उससे पहले you're actually working on your project, singles, learning production and all that. And इसके साथ ये क्या बोलते हैं उसको switch to आप अभी इंस्टाग्राम पे भी आ गए हो, आप रील्स कर रहे हो, आप रिमिक्सेस कर रहे हो, स्पेशली लाइक कोई आपको अच्छा ट्रैक लगा रहा है जो मेन स्ट्रीम है जैसा भी है, यू कैन ऐड योर ओन वर्स टू इट. तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? आपको कब लगा कि ओके ठीक है ये भी एक एस्पेक्ट है जिसमें मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ? But I think as soon as reels came out as a feature on Instagram, तो मेरे को समझ आ गया कि इस पे कुछ तो होने वाला है. People are gonna latch onto this and like it's gonna be the next big thing. I figured that out very early. But like with all this studying and everything that I was doing on the side, I couldn't give it my all at that time. Or when I realized कि like I think one of the first videos to blow up for me was when I did a verse on Bazigar. Yeah, I guess yeah. Bazigar वाला जो आपने कहा डिवाइन वाला remix. Right. So I think that was one of the first videos that, और वो बिल्कुल candid, मतलब उसमें कोई प्लान ही नहीं था उसको रील डालने का भी. मैं और मेरा दोस्त एक बैठे थे, हमने कैमरा रखा, हम कॉफी पी रहे लिटरली उसकी वीडियो में. We're just drinking a coffee and I'm like bro let's start. And like I just had a free verse and I just did that उसके ऊपर beat के ऊपर. And we're like हाँ यार अभी वीडियो बन गई है चलो डाल देते हैं. We posted, got over like 2 lakh views. Yeah, and it was one of my first like actual. Yeah, actually वो उसकी engagement काफी ज़्यादा चली थी. That one reel blew up actually. Right. And I think ever since मैंने फिर वो चीज़ वो करी like and then I think I started rapping in the car. I think that's what I realized maybe this is my zone. और मेरे को एक और चीज़ बहुत अच्छी रियलाइज हुई कि like when you and me and like anyone else we're listening to music, या तो हम अकेले अपने बेडरूम में सुन रहे हैं कुछ बहुत अच्छा, या जो नेक्स्ट बिग थिंग होती है लोग गाड़ी में गाने सुनते हैं. हाँ गाड़ी वगैरह. Either they're alone, they're with their boys, they're with whoever. चाहे वो गाना रोमांटिक है, अग्रेसिव है या फिर लोफाई कुछ है, तुम गाड़ी में सुनोगे चाहे तुम गाड़ी चला रहे हो. So I think car is a very good spot to just vibe to music and I think that's what I saw कि हाँ यार ये मेरे को करना है. I think if I am in my car, people can have that comfort zone while watching कि हाँ यार ये बंदा तो हमारे जैसे chill करता हुआ कुछ कर रहा है and then he's adding his verses on top.
So it just becomes like a fun visual as well. उससे एक रेलेवेंस वाला फैक्टर भी चला जाएगा, क्योंकि ठीक है भाई हमें जो बैंगर्स लगते हैं हम घर पे तो सुनते ही हैं, बट देन कभी हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हम गाड़ी में बजा रहे हैं, भाई ये बंदा उस पर अपना वॉइस डाल रहा है, बंदा इतना सही कर रहा है। Exactly. सही है यार वो। तो हाउ वाज द इनिशियल रिस्पॉन्स, लाइक जो सीन जैसे म्यूजिक सीन है, जो आर्टिस्ट का आप रिमिक्स कर रहे हो, तो हाउ डिड दे रिएक्ट? ऐसा कुछ था उस टाइम पे कि लाइक? यार आई थिंक द इनिशियली तो जब मैं a few videos I posted initial उनमें तो as such like I could see the traction coming but no artist coming in. The big one was Kaleshi Chori. हाँ, When I did a verse on Kaleshi Chori, that's when the scene changed for me personally to an extent. So I had a word with Hajjas after that. अच्छा, So and then there's so many other artists that I connected with. Even before that, like I think I've been doing this for a while now. I know enough people in general. Kaleshi Chori was also one of the reels that was actually one of your most played reels, I would say, because it is काफी ज़्यादा ही है. It might be one of the most played reels on my page till now. It crossed 2 million views or something. I remember the last time I checked. Yeah, नहीं. So but yeah, that was really good. That's So ever since it's been different. I've been just working on more and more reels. So I've got a few more blow-ups in between and here we are. और बाकी लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था जो आपके पहले रील्स आप डाल रहे थे, बाजीगर से भी पहले वाले जो आप डाल रहे थे रिमिक्सेस पे? हाउ वाज द ऑडियंस जो भी आपने आई थी, कैसे रिएक्ट कर रहे थे? I think that's just the core of what I listened to at that time. जो मैं उस टाइम पे डाल रहा था कि जो भी मेरे like I think that's how music is. It just inspires you at the moment. तुम जो भी सुन रहे हो, तुम तलांजुम सुनोगे तुम पोएटिक हो जाओगे, काफी तुम रफ्तार सुनोगे तुम्हारा जिम जाने का मन कर सकता है, गुस्सा आएगा। या एग्जैक्टली। सो इट्स जस्ट दिस स्पेक्ट्रम ऑफ वाइब्स दैट आई लिव बाय, और मैं शुरू से वही करता आ रहा हूँ। इट्स नॉट कि मैं पहले कुछ और कर रहा था और अभी कुछ और कर रहा हूँ। व्हाट आई फील आई राइट। काफ़ी सही है। सो अच्छा, और फिर अभी ये इंस्टाग्राम वाला साइड होगा कि ठीक है आप यहाँ पे रील्स वगैरह कर रहे हो, आप रीमिक्सेस कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो एक्चुअल गुड कंटेंट एंड लाइक काफ़ी एक रेलेवेंस वाला कंटेंट बोल सकते हो उसको, बिकॉज पीपल एक्चुअली वाइट टू इट। एंड देन दूसरा साइड है, दूसरा स्पेक्ट्रम है कि आप स्पॉटिफाई पर हो। सो ये सब चीज़ों में आपका लाइक जो म्यूजिकलिटी है दैट इज डिवाइडेड, आई वुडंट से डिवाइडेड, बट या इट इज़ रिदम वी हु इज ऑल्सो रिमिक्सिंग एट वन साइड ऑफ द स्टोरी एंड ही इज ऑल्सो डूइंग दिस। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि टू लाइक इंक्रीज और इंक्लूसिविटी और फील मोर इंक्लूसिव इन द सीन, आपको टूर्स या गिग्स ऐसे कुछ में भी शुड टेक ये मतलब आपको पार्ट लेना चाहिए, शुड बी अपीयरिंग ऑन गिग्स एंड ऑल दैट, ताकि एक रीच रहेगा ऑडियंस के साथ, एक कनेक्ट रहेगा ऑडियंस के साथ? I think it's very important, and that's a very good question. Again, I think about this a lot as well. There is a very thin line between being, again, nothing wrong with either, but being an artist and an influencer. Yeah. ठीक है? But the thing is, I have always been an artist. There's this influencer वाली growth जो अब आ रही है in my personal experience and my my platform. ये जो Instagram side of thing, now that I'm understanding all these things that have been coming with all the followers, that's different. But at the same time, this is what I firmly believe in. This is what I started with. I am an artist before anything else, and that's what I always will be. And the connection part, gigs पे जाना, ये वो करना, I think I go on like any gig I can, be it if I'm performing or not. I think it's just fun to support other artists and just be there for people, क्योंकि I know so many friends and जो perform कर रहे हैं, so I want to be there for them regardless. यार I'm there, go push yourself regardless. Like that's just something I do. Yeah. And even with connecting with people, that's how the originals are gonna get communicated. ये जब मैं gigs पे perform कर रहा हूँ अपने गाने, so I'm not performing my remixes usually. Couple I do, but usually it's all originals. Because that's my personal, like that's just all me. वो मेरे लिए बहुत important रहता है. I think the Spotify side of it is very important. It's as important as the Instagram side of it. I don't compromise or any of them. अभी ये जो मैं बोलने वाला, दिस कैन बी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट लेट्स से आपका जो सेकंड लास्ट पीस था मेडे, वो मेरे को काफ़ी अच्छा ट्रैक लगा, उसमें स्ट्रक्चरिंग काफ़ी सी थी, आई गेस देयर इज अ बीट स्विच काफ़ी एविडेंट है एंड दिस फ्लो स्विच एज वेल, तो उसमें आपने लाइक सब कुछ पुट इन किया, लाइक वो एक्चुअली अच्छा ट्रैक है एंड एक इमेजिनेशन रखता है, ठीक है, दिस वन एजी गाय, एजी मतलब जो बंदा ऐसे थोड़ा वो होता है, प्रोएक्टिव होता है, दैट्स वन गाय जो आपका स्पॉटिफाई सुन रहा है एंड वो मेडे सुन रहा है, बट देन ही इज ऑल्सो लाइक ये बंदा तो लाइक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, ये बंदा तो रील्स करता है, तो डज दैट लाइक कभी वो थॉट अफेक्ट करता है? क्योंकि देयर माइट बी पीपल हु विल बी जजिंग यू कि ठीक है ये बंदा तो रील्स वाला है, ये बंदा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये म्यूजिक वाले साइड में भी क्या ही ऐसा कुछ ऐसा थॉट लगता है आपको? फ्रैंकली नहीं यार, I just think कि नहीं, I think if people, I have a lovely audience, like trust me when I say that कि मतलब
वो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो इतने सपोर्टिव और इतने कॉन्स्टेंटली इंगेजिंग है मेरे सारे कंटेंट के साथ कि मेरे को रोज वो डीएम भी करते हैं, दे सेंड मी सो मच ब्यूटीफुल, लाइक यू नो, सो मेनी ब्यूटीफुल मैसेजेस, लाइक That's दे good. कॉन्स्टली गोना कीप इंटरेक्टिंग विद मी, आई एम गोना डीएम देम, कुछ भी नया आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लाइक एवरीवन इन द लूप. सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट वन ऑन वन कनेक्शन मोर देन कि ये बंदा इन्फ्लुएंसर है, आर्टिस्ट है, क्या है. उनको बस मेरे गाने सुनते हैं एंड दे एंजॉय इट. एंड बी इट लाइक अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ लोग जिनको शायद ऐसा लगता होगा, एज यू से, देयर इज दिस वन एजी पर्सन. Yeah. There's a million people that aren't edgy, and I can't possibly concentrate on that one edgy person. It's just how the game is. You do one thing, you're gonna get good people like that support you, and you're gonna get again good people that don't support you. But it's just the game, man. You play the game. It comes with its own process. काफ़ी काफ़ी ब्यूटीफुल आंसर किया आपने क्वेश्चन. आई वाज एक्सपेक्टिंग एक अच्छा सा ये, बट नहीं है यार. आई एक्चुअली लाइक काफ़ी सही थॉट प्रोसेस है. बिकॉज एक्चुअली अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो जो इन्फ्लुएंस भी, लेकिन आप ऐसा थोड़ी ना कर रहे हो कि लाइक आप कुछ ऐसे किसी और टाइप के कंटेंट को क्रिएट कर रहे हो जैसे जनरल लोग करते हैं, कोई ऐड वैसा कुछ नहीं है. यू आर एक्चुअली रिमिक्सिंग गुड सॉन्ग्स, और वो रिमिक्सेस भी काफ़ी सही है. वो रिमिक्सेस भी काफ़ी वाइब है. आपका बाजीगर वाला, खलेशी शोरी वाला, आपने एक और क्या था आपका स्टिल रोलिंग वाला, ये सब काफ़ी ज़्यादा वाइब है लिख के. और दूसरी बात, एक और चीज़ जो मैं सोचता था कि रिमिक्सिंग में जैसे, अच्छा ठीक है, एक तो पहली बात तो आप रील कर रहे हो, ठीक है, दिस इज़ रील, ओके, दिस इज़ अ रील, दिस इज़ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, सो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ ड्यूरेशन टू डू योर रिमिक्स एड इन योर स्ट्रक्चर. सो हाउ डू यू लाइक ब्रेक डाउन द सॉन्ग स्ट्रक्चर एंड थिंक कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेरा वर्स बैठेगा, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, बिकॉज इट एक्चुअली फिट्स इन. अगर आप सुनने जाओगे, अगर एक ले मतलब कोई बंदा सुनेगा तो वो नहीं मानेगा भाई कि बंदा ऑफ बीट है या ये कहीं और जा रहा है. हाउ डू यू स्ट्रक्चर द वर्ड्स दैट यू गोना ऐड इन द रिमिक्स? I think that's just the part of the job. और I think in मेरा 90% काम जो आप देखते हो वो सब इंस्टिंक्ट पे चलता है. It's my first time hearing the song. That's when I decide 90% की वीडियो क्या होगी, क्या ऑडियो होगी, कैसा होगा. मैं कभी भी ऐसा नहीं करता एक वर्ड्स बनाया एंड आई एम लाइक वुड इट बी यहाँ पे इस गाने में, या फिर यहाँ फिट होगा या यहाँ फिट होगा. आई डोंट लुक एट एनीथिंग. फर्स्ट उस पे मेरे को मेरे इंस्टिंक्ट पे जो बढ़िया साउंड करता है कि यार ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, आई गो विद दैट. बिकॉज देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स आउट देयर दैट आई डोंट ओवरथिंक एनी. आई नो कि मैं एक गाना करूँगा फिर मेरे को दूसरे पे भी आना है. आई कांट गिव दिस मोर देन यू नो लाइक दिस XYZ amount of time. So if I overthink a song, then that delays the entire process of getting more views out there and get more songs out there. I've been like that's what I'm busy enough कि मैं इतना काम एक काम पे इतना टाइम नहीं लगा सकता अभी. So it's just that it's all related to instinct, whatever I've been doing. It's just I know कि quality निकलनी चाहिए. Like there's so many videos I make that I never posted. कि मेरे को मैंने बनाई पूरा end product ready कर लिया और मैंने कहा नहीं यार this is not it. This is not something that resonates with me personally बनाने के बाद. वो मैं नहीं डालूंगा. I know कि this will sound good only then, like to me at least. And then I can put it out there. तो आपका creative, It's never कि मैं बैठ के सोच रहा हूँ. या तो आपका क्रिएटिव प्रोसेस यही है, लाइक यू लिसन टू द सॉन्ग, यू वाइब टू इट एंड देन यू नो अपने आप से वो आपका अंदर का म्यूजिशियन जाग जाता है. ही नोज कि ठीक है यहाँ पे यार ये वर्स बैठेगा. और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट भी है कि जो वर्सेस आपके होते हैं, खलेशी छोरी वाला जो वर्स है लेट्स जस्ट से, उसमें जो आपके लिरिक्स हैं इट एक्चुअली सिट्स इन विद द थीम ऑफ द ट्रैक. खलेशी छोरी जो ट्रैक है उसके साथ आपका जो वर्स है, जो थीम आपके वर्स का, जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, एक सजेस्टेड मीनिंग जो निकलता है आपके वर्स से, अगर एक बंदा सुनेगा एक वर्ड में उसको रखना है, एक सेंटेंस में रखना है, तो वो खलेशी छोरी के थीम के साथ काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करेगा. तो ये भी आप सोच के करते हो और इस वाइब की आप वही फील करो एंड यू स्प्रेड इट आउट? नहीं, I think it's very important to stick to the song at the end of the day. I think I just can't keep a verse which has a good flow and not make sense with the rest of the song. So if I'm like I take myself as you know कि इस गाने पे best feature ये बंदा कैसे बन सकता है, simple as that. And that's what I do. So I have to stick to the element of the song and like you know the musicality and the lyricality of the song. मैं उससे भी बहुत बाहर नहीं जाऊँगा, but I'll do it my way. That's rhythm B in general. That's like you know people hear it and it's like this is rhythm B. That's cool. मैंने ये भी पढ़ा था आपके Spotify प्रोफाइल में कि that you've been on MTV इंडिया की किसी शो पे, that's national television if I'm not wrong. तो वो कैसे हुआ था, क्या था उसका मतलब? यार a lot of people don't know this. During lockdown I was this thing you know when everything was happening online I was on roadies. You were on roadies? How would I not? ये तो मतलब I tried to research a lot about that, मेरे को मिला नहीं. So okay, so how was that? कैसे हुआ तो? Yes. No, there's like everything, like all those audition videos, everything. So I got contacted
from someone from MTV only. Okay. This was back in the day when I said I was a magician. This was like I was rapping back then, but there were two things at the same time. So, and I think that's how I got the best of lockdown. I think like the initial audience that I got on my Instagram was through roadies. थ्रू रोडीज, ओके. सही है यार. मतलब मैंने पढ़ा था, और मतलब एक आदमी एज एन आर्टिस्ट इतनी सारी चीज़ों में हो सकता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इज इन रोडीज. एट वन पॉइंट वो दिसंबर में भाई बैंगर्स रिलीज कर रहा है, सेल्फ प्रोड्यूस, सेल्फ टॉट. एंड एट वन पॉइंट भाई वो ऑलरेडी जो बहुत अच्छे अच्छे मेन स्ट्रीम सॉन्ग्स उस पर वर्स फिटिंग कर रहा है, उससे भी वो बेनिफिट कर रहा है, उससे भी उनको उनकी ऑडियंस आ रही है. भाई क्रेजी शिट है भाई एक्चुअली. लाइक जो एक आर्टिस्ट का जो मीनिंग रहता है कि ठीक है भाई, दिस गाय इज सपोज टू बी रियल, दिस गाय इज सपोज टू मेक समथिंग ऑफ हिज ओन. भाई बहुत फिट इन कर रहा है आपका पूरा वर्क उस फ्रेम में फुट. और अंडरग्राउंड सीन के साथ कैसा आपका, लाइक डू यू नो आर्टिस्ट देयर या ऐसा कुछ है, मतलब उठना बैठना टाइप, और लाइक कुछ ऐसा आप कर रहे हो? I think that's my entire thing. It's a group of people that I work with also. They are all connected with so many artists, including me. जैसे मैं हूँ, मेरे producers हैं, like the people that make my beat. There's Ro that made Mayday. Yeah. And there's VJ Vedant Jadia. He made another song which is also a part of my EP Mayday. ये कुछ ऐसे और मैं producers जानता हूँ. So it's a RIJ, Rijul. He made another beat. And then there's so many rappers that I constantly work with in the scene. There's RDC, there's Shreyas, there's Spaz. So these are all underground. Shreyas from Pune. Shreyas to Pune wala. No, these are all from Delhi. Okay. All the people I'm naming right now, all from Delhi. And there's so many wonderful artists here. Roy. So like I'm connected with almost, I would say, like everyone who's actually been like on gigs and stuff. I think मैं सबको कहीं ना कहीं जानता ही, because I've been doing this for like all these people, and it's just so much fun connecting with the people that have a similar vision with you. So as a musician, let's say, not as an influencer वाला, but as a musician, आप अपने आप को कौन से फ्रेम में रखना चाहोगे? Because music wise, I think underground would be the term, because आप underground artist के साथ हो, and like अभी भी चल रहे हो, you still are yet to find the big and the mainstream audience that's yet to come. And on the second side, आप Instagram पे you're remixing mainstream songs, जो सॉन्ग्स ऑलरेडी फट रहे हैं, जो सॉन्ग्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और उस पर आपका रीमिक्स आ रहा है, आर्टिस्ट सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं उसको. तो आप कहाँ पे अपने आप को रखना चाहोगे? मतलब वेयर डू यू थिंक दैट यू वुड सेट राइट? I think I'm everywhere. That's what I want, and that's how I want it to be. Frankly. Okay. No restriction. I don't want to stick to a sound, stick to an audience, anything. मेरा जो मन करता है, I put it out there. But I think just the perfect way is like actually the mid ground of. I think क्योंकि this is an emerging genre again. I think now it's just not about कि यार ये commercial है, underground है. There is another sub genre which is underground commercial. हाँ. Underground commercial का भी चल रहा है, या. Commercial. So I think there's a lot of artists emerging through that genre particularly. And I'm not saying I'm one of them, but मेरे लिए यार I can like I'm not restricted to this scene. Let's just say that. क्योंकि I know a lot of people that won't do certain things क्योंकि वो commercial है. And they want to be that that वो vibe कि वहाँ यार मैं underground हूँ, and like I want to stick to that vibe, that culture. I'm not against any culture in any way, but I just think personally for me, I'm all about the commercial aspects of it. Like if I want to make a Bollywood song जो किसी मूवी में प्ले होगा तो मैं बनाऊंगा. That's me. अगर मेरे को एक ऐसा गाना चाहिए जो बिल्कुल ही रॉक और बिल्कुल अग्रेसिव होना चाहिए तो मैं वो भी बनाऊंगा. So there's no restriction in that entire spectrum. काफी versatile है फिर आपका पूरा ये. Yeah, that's the idea. Yeah. तो अच्छा ठीक है, अब अगर एक टेक मैं आपसे लेना चाहूँगा, बिकॉज एज यू सेड कि यू आर दिल्ली बेस्ड, ओके, और आपका जो पूरा सर्कल है जिनके साथ आप काम कर रहे हो करेंटली दे दिल्ली बेस्ड. सो इफ एक सीन के अंदर इफ आई वर टू पुट यू, दैट वुड बी अ दिल्ली अंडरग्राउंड सीन एज अ स्पॉटिफाई आर्टिस्ट, एज अ आर्टिस्ट जो एक्चुअल म्यूजिक, ओरिजिनल म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है. तो डू यू थिंक दैट दिल्ली, स्पेशली जो दिल्ली अंडरग्राउंड सीन है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट दिल्ली में. There's Shorty, you might know, alternate सब genre कर रहा है he's, and then there's Zorba and all those guys जो drill कर रहे हैं, काफ़ी hard drills कर रहे हैं. So दिल्ली का कोई एक particular sound नहीं, Delhi never sticks to one particular sound. Delhi itself is versatile. दिल्ली की audience also versatile. तो आपको लगता है कि Delhi scene, जो Delhi audience है, is that more accepting towards most new sounds and fresh music other than कोई और scene जहाँ पे they're only sticking to one topic or one theme? ऐसा आपको लगता है ऐसा कुछ? I think from from a very far perspective, I would say, अगर मैं बहुत दूर से इस पूरी इंडस्ट्री को देखूं कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, with the layman point of view,
Delhi is emerging. Delhi is emerging and Delhi is growing rapidly in terms of rap and learning musicality. Yeah. Because कुछ time पहले अगर आप देखो, and this I'm saying not to 5 years ago, Delhi was heavily inspired by the Bombay scene. Yeah. Any Delhi rapper would try to sound like a Bombay. The Rags to Riches story और पूरा जो theme था. Yeah. Which is not a bad thing again. Bombay has its own sound, but Delhi was yet to have its own sound, which now it does. Now there's all these melodies. Now there's all this. Again, I think underground commercial का एक बहुत बड़ा chunk Delhi संभाल रहा है. Actually, हाँ, मतलब सोचने जाओगे तो यार मतलब अंडरग्राउंड कमर्शियल या क्या हो या फिर अंडरग्राउंड भी हो, बिकॉज आपको अगर पता होगा अंडरग्राउंड के अंदर तो मैं आई वोंट पुट, बट यू माइट नो धनजी, राइट? धनजी यू माइट नो, एंड अभी उसने ही इज एन अहमदाबाद बेस्ड रैपर, बट ही वेंट टू दिल्ली टू लाइक इंट्रोड्यूस हिज न्यू एल्बम रुआब. आपको पता है रुआब, लाइक वी डिड दैट. सो वो दिल्ली में उसने किया था. बीइंग एन अहमदाबाद बेस्ड रैपर ही वेंट टू दिल्ली बिकॉज ही न्यू हिज कोर ऑडियंस दिल्ली में है, एंड मतलब उसके ज़्यादा करके जो लिसनर्स है, ज़्यादा हार्ड कोर लिसनर्स हैं वो दिल्ली बेस्ड है. तो दिस bro, I think Delhi is growing. Delhi is adapting to so many artists कि मतलब उनको जो artist दिख रहा है, like they are gaining this ability to just have an ear to like actually listen to people. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले rap के लिए ऐसा नहीं था. Even like when I was in my school days, not everyone was listening to Hindi rap because it was considered यार ये तो हिंदी rap सुनता है. It's not cool. It wasn't cool back in the day. Now it's completely opposite. Now like if you're listening to Hindi rap, it's become like the new cool kind of. Yeah. Damn, this guy is discovering new artists. मतलब so many artists just blew up just because they sounded mysterious कि यार, और वो ऐसी चीज़ बन जाती है फिर एक ऑडियंस के दिमाग में कि यार ये बंदा मेरी प्लेलिस्ट में होना चाहिए, कि कोई इसको सुनेगा तो मेरे से पूछेगा कि यार ये कौन है. That becomes like an entire subject of having that thing कि यार this is I discovered this artist. So I think that's like the era that Delhi is in. So it's very good for artists to have their music out there and just क्योंकि सब सुन रहे हैं इस टाइम, सब नए गाने सुन रहे हैं. आपका जो Spotify वाला साइड है, let's go to आपका जो ओरिजिनल म्यूजिक जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर आता है. तो जो ट्रैक्स वगैरह आप करते हो वो थीम कहाँ से इंस्पायर करता है आपको? या जैसे अभी आपकी नई EP आ रही है मेडे, उसमें उसका जो थीम है वो कहाँ कोई इंस्पायर्ड है, या फिर इज इट व्हाट इज मेडे लाइक, अगर आपको बताना हो उसके बारे में? Yeah, so Mayday itself, the word is essentially it means कि मतलब Mayday is the thing you say, it's an emergency signal. If your plane is about to crash, एक ship में कोई problem आ रही है, that you scream Mayday. That's what the captain would say. And Mayday is entirely about that. अभी Mayday की म्यूजिक वीडियो पे काम चल रहे हैं कुछ, but essentially it's a 3-song EP, and it symbolizes life. अब आपको वो लगेगा कि उसमें the first song was just about a plane crashing. If you hear it correctly, you can like when I say it's Mayday, जब वो hook आता है गाने का, you can hear कि कैप्टन और जो पायलट और को पायलट है वो बात कर रहे हैं दूसरे से. It's in the song. उसको एक ऐड किया है आपने यहाँ, मतलब एक sorry. So you can tell the plane is about to crash. Now the 2 songs are basically gonna be the rest of the story कि आगे क्या हुआ. And after the 3rd song you're gonna realize कि कभी प्लेन के बारे में था ही नहीं. Okay, so did you just spoil it right now या वो एक I didn't spoil it in any way. Because I didn't tell you what it is, how it is, but you relate it to your life. That's what Mayday is about. Mayday is not just about this object that just came down and crashed. It's about what you symbolize the object to be and how you perceive the entire EP. It's open angled and you can see it from so many directions. That's what Mayday is about. So if I'm not wrong, जितना मैं समझ पाया, this is a story EP. पहले तो मतलब ऊपर से if one has to put a term to it, story EP है, एक story line है plane crash वाली, but then इसका एक suggested meaning अलग तरीके से that one can interpret अपने life के बारे में, anything like that. And I'll tell you the best part. You can pick each and every song. Yeah. If you were to hear it as singles, they would make perfect sense. ऐसा नहीं है कि तुम्हें 1-2 गाने सुनने पड़ेंगे तभी तुम्हें तो narrative कोई narrative से नहीं चल रहा, कोई story line connected ऐसा नहीं. If you hear 1 2 3 पूरा narrative तुम्हें समझ आएगा. If you hear 3 2 1 that's still gonna make sense. भाई मतलब actually I'm speechless क्योंकि ऐसे projects बहुत कम सुनने मिलते हैं. If concept driven जो होते हैं, आप अभी बोल रहे हो कि 3 tracks साथ में सुने it will make sense, single track सुने it still make sense. तो भाई मतलब it's actually cool. तो अभी कैसे चल रहा है उसका creative process? Have you completed the production side of it या कैसे चल रहा है अभी? The EP is complete. The EP is complete. The distribution and everything is just getting sorted out. Like all the last minute details are just yet to be worked on. Okay. बाकी गाने तो सारे बने पड़े हैं.
or and I'm not again like Mayday is something that is very close to me, and like the musicality of it, like अभी second गाना आएगा उसका. I don't want to spoil it for anyone, but you're gonna see like the musicality of it कि मतलब the original work that we're talking about. Like it's very important for me to put my original sound. वहाँ तुम like वहाँ you're gonna discover like the tonality differences of like what I've done in that song and like why I've done it in the first place. तो साउंड भी चेंज हो रहा है बीच में, लाइक विद इन द सॉन्ग्स आप अलग अलग जॉनर्स भी ट्राई करो, और इट्स स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर जॉनर, सब जॉनर ऑफ हिप हॉप? यार नहीं, I'm not restricted to hip Okay. hop in any way. It's a lot of switches and a lot of things happening in the song. So if I'm not wrong, Mayday is the first project, right? First EP जो आप roll out कर रहे हो since you Yes, started. to be specific, Mayday is my music. first EP. Exciting stuff, exciting stuff. I've done singles in the past. This is my This first. is this is your first project जो एक storyline एक concept के साथ driven है, and you हाँ जी, absolutely. सही है यार. दिस इज एक्चुअली कूल. वन शुड एक्चुअली एक आई आउट रखना चाहिए भाई इस चीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे, मैं वही बोल रहा था, ऐसे कॉन्सेप्ट एल्बम्स, कॉन्सेप्ट ईपीज बहुत कम से देखने मिलता है. लोग ईपी के नाम पे बस एक कोई स्टोरी को 3-4 बार काट कर डाल रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं. बट या भाई दिस इज एक्चुअली सो कूल. आपका अभी थोड़ा सा वील स्विच द कॉन्वर्जेशन का थोड़ा स्टाइल. आपका टॉप 3 डीएचएस क्या होगा अगर आपको बोलना होगा? Top 3 डीएचएस आर्टिस्ट्स ऑफ ऑल टाइम. यार I don't. ये तो बड़ा difficult question. फिर भी हो गया. if you I think नाम ही डालना होगा. I think in my top 3 in no particular order would be Raftaar definitely. All right. I think Raftaar sir heavily inspires me like in so many ways. Like the way he portrays himself, I think Raftaar sir is definitely up there. And then there's Tala Anju. All right. Poetic side I से. Yeah. And this is very mainstream I'm talking again, but yes, Tala Anjum is definitely there. And yeah, then there's this third position, like again, no particular order, but like this third artist that I'm thinking about, there's so many out there. There's so many, because like वही मैं बता रहा हूँ, it's not restricted to कि मैं सिर्फ अच्छे monthly listeners वालों के नाम लूँ. Yeah, mainstream. सीधे मौत is lovely. Then there's this artist Dhruv Aesthetic, of Yeah. course, he's lovely. उनके भी ट्रैक्स काफी सही होते हैं. And वो Dhruv Aesthetic with his melodies. man, it's एक्चुअली lovely. उनका वो एक ट्रैक था, राइट? आई फॉरगॉट द नेम ऑफ इट, बट वो काफी मेलोडिक था एंड वो भी सेल्फ प्रोड्यूस था. ही प्रोड्यूस्ड इट हिमसेल्फ. एंड तू नशा. तू नशा, या एक्चुअली दैट इज वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स. एंड Right. भाई दैट्स एक्चुअली क्रेजी. वो काफी मेलोडिक Yeah, ट्रैक so there's so many like artists जो अभी emerge भी कर रहे हैं. Like so I can't particularly pick like a top 3, but yes, like the 2 names that I took, I think वो 2 तो 100% आएंगे मेरे top. ऑलराइट. सो टॉप 3 अंडरग्राउंड डीएचएच. Underground, alright. या. And so okay, just to be clear, when you say underground, it can't be anywhere near mainstream. Like, Yeah, you actually have to pick- non-mainstream artists who haven't like hit the bar yet of वो जो बड़े listeners होता है, बहुत बड़ा mainstream sound होता है, they're not working on that. Okay. So I think there's again like I worked with this artist RDC. RDC is really good. His sound, his versatility is on another level. That's really good. Then there's Roy again. Yeah. That I said. There's Paz. There's Shreyas. और ये मैं सारे अलग sounds बता रहा हूँ. I'm just putting it out there. Yeah. You would think I'm just putting it out there. Everyone has their own sound. Nothing related to each other. That's the best part of being where I am, knowing these people. Then there's JK. There's me, of course. अपने खुद के फेवरेट अरे- है. सही है. नहीं, favoritism की कोई बात नहीं यार. सब अपना So अपने ये sound जो करते हैं. ये जो अंडरग्राउंड की बात बोली आपने, these are all Delhi based artists. These are all Delhi. Okay. These are my people, man. I'm simply just putting all my names So out काफी there. biased आंसर रहेगा ये अगर बोलना हो, बट चलो ठीक है, सही है, एक्सेप्टेबल. तो अच्छा, एक और चीज, आपका ड्रीम कोलैब क्या रहेगा? बिकॉज आई हैव सीन यू कोलैबोरेटिंग विद आर्टिस्ट, बट व्हाट वुड बी योर ड्रीम कोलैब? भाई इस बंदे के साथ तो क्या वाइब सेट हो गया, इस बंदे के साथ क्या ही ये होगा. व्हाट वुड बी योर ड्रीम कोलैब? Let's call it a goal to start with. या more than a dream. या लेट्स गो. या Goals sound more चलेगा. achievable. यार बहुत सारे हैं एक्चुअली. तो लाइक देयर सो, वही तो मैं कह रहा हूँ. और मतलब कोई लिमिट ही नहीं है. इतने सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं. मेरे को सब क्या काम करना है. मेरे को किंग के साथ भी काम करना है, मेरे को तला अंजुम के साथ भी काम करना है, मेरे को तला यूनिस के साथ भी काम करना है, मेरे को उमैर के साथ काम करना है. आई वांट टू वर्क विद सेज. I want to work with, I think, but Raftaar, man. I think just if I had to pick one, Pick one, top of my head, Raftaar. Raftaar. दैट्स कूल. मतलब रफ्तार इज लाइक काफी बाउंसी टाइप बंदा है. बाउंसी नहीं बोलेंगे उसको, बट लाइक काफी फुल ऑफ एनर्जी दैट गाय इज. एंड लाइक Bro, I just resonate with him. To like, I think there's something that I relate. जो मतलब, और मतलब there's versatility, bro. Like Raftaar has every sound packed.
You want that commercial Bollywood, he's gonna give it to you. You want that core underground sound, he's gonna give it to you. From the vocal scratches to like melodies, it's everything. It's good. काफ़ी वो भी काफ़ी versatile है. He's done commercial shit. वो ads के लिए भी शायद he's done music. He's done music for labels. अभी प्रभ के साथ इसकी जो EP आई थी bro, that's actually good, crazy. Trap Pra. Yeah. Trap Pra was one of the craziest songs of that EP. And like probably I think this year like Trap Pra is one of the craziest songs that dropped. Actually यार, actually. So सही है यार. फिर आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे? मतलब अभी आप क्या सोच रहे हो फ्यूचर में? ऑफ कोर्स लाइक मेड रोल आउट करना है, उसका पूरा एक आपने कैंपेन सोचा रहेगा एक सही सा. बट देन अदर देन दैट क्या कर रहे हो अभी आप फ्यूचर में? व्हाट शुड वन लुक आउट फॉर? A lot of rhythm beat to start with, be it on Instagram or Spotify. Okay. And the future has Mayday के बाकी गाने of course coming in. So which is going to be July end से लेकर August. So just stay like very prepared for that when I say it. Okay. Because Mayday is about to bang. Mayday is about to hit. Mayday is about to do everything. Mayday is about to crash. If Mayday is about to crash. yeah. तो वो जब गाने सुनोगे तो लोगों को बहुत मजा आने वाला है. So I'm really looking forward to that. And then I don't know when you put this podcast out, but Jadi Booty is out now. That's a collab I did. And so that song in general, like I'm not going to say much about the song, but उस नाम का टाइटल है जड़ी बूटी. उसी से बहुत लोगों को बहुत कुछ समझ आ जाए. So you're gonna have fun with that song. तो उस गाने को जाके सुनो जड़ी बूटी को. And then there's a lot more singles that I'm currently working on as we speak. अच्छा. And there's let's just say मैं गानों से ज़्यादा भी और भी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ. It's not just Spotify पे singles नहीं आ रहे सिर्फ. It's going to be a lot of videos. It's going to be a lot of videos with different labels, with different people. Okay. So there's a lot of rhythm B coming in 2023. It's crazy man. It's gonna be a great year for you. और फिर कुछ gigs या events वगैरह कुछ plan कर रहे हो Mayday के roll out के बाद? Constantly यार, constantly. I think that's my best way to go about it. Like I love having my people just come to my shows, say hi, meeting. I think that's one of the best parts of doing what I do, just meeting fans in general. कहीं पे भी like you go out there, you meet people, and gigs are a major part of that. That's why I keep gigs in the first place. Just interacting with people that actually listen to me. तो बहुत आने वाले हैं यार gigs तो बहुत आने वाले हैं. So best bet to know when I'm performing is just my Instagram. I post everything on my Instagram. सही है यार ब्रो. एक्चुअली आपका Mayday एक्चुअली इवन मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ Mayday के लिए, बिकॉज मैंने टाइटल ट्रैक सुना है. और जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं प्लीज़ जाके टाइटल ट्रैक सुनो. you're gonna actually bounce with that. और भाई सही है यार. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर future projects man. Best of luck for your future. Thank you so much man. I guess we'll wrap it up for today here. This was Lovely. Rhythm V. We had an insightful conversation with him. और the audience that Rhythm V has और जो audience आ रही है, I hope you got to know more about him और उनके childhood के बारे में, उनके इसके बारे में, the things that's been done apart from music and all that. So सही है यार. It was great having you man. It was great talking to you. Thank you so much for having me again. Pleasure talking to you. And a big shout out to Off the Dome man. You're doing crazy stuff. Yes, for sure, man. Anyways, thanks for coming up, bro. And I hope you had a great time here. And I wish you a lot of luck for your future projects, man. I'm actually hyped up for Mayday, and yeah, let's do this, right? Really appreciate it.